was once considered one of the great empires of the world. This city, in the northern part of Karnataka, was prominent on the then world map of trade and commerce. The old fortress, surrounded by a moat, impregnable to enemies during its better days, lies in shambles today, reminding one of a bygone glory. Situated 20 kilometers away from Gulbarga, Surpur, a small town, was once well known for a very specialized style of painting, which took its name from the village that gave it birth and succor, Surpur painting. Now the only living exponent of this art form is Vijaya Hagaragundigi, a young man in his early 30s. Soft-spoken Vijaya is a self-taught artist with a burning desire to revive and preserve an art form which has almost become extinct for lack of patronage. He is also an avid admirer and collector of antiques and any article that harks back to a glorious heritage. According to the history of the locality, an artist by the name of Garudadri, inspired by the Mysore and Tanjavur schools, devised a new style of miniature painting, which was unique, and it was encouraged by the Surpur rulers. The Surpur painting does not fade in sunlight. It cannot be washed away by water. They last for years without pigment deterioration. Just 3 centuries ago, Surpur was being ruled by the Nayaks, the local chieftains who patronized various art forms, including the traditional painting. This was the palace of the Nayaks, but a painting style of its own flourished for years. These dry wells, brick and stone walls, wooden pillars and ceilings were once decorated with paintings, an array of bright red, yellow, white, black, blue and green colors. As a young boy studying at the Fine Arts School of Gulbarga, Vijaya visited Surpur on a school trip. That's where he was fascinated by the paintings, the Surpur style. बचपन से तो मुझे शौक था ड्राइंग बनाना या पेंटिंग बनाने का, और मैंने मेरा स्कूल के बाद कॉलेज ज्वाइन किया, और कॉलेज में मेरे पिताजी ऐसे चाहते थे कि मैं भी कुछ दूसरों के वैसे पढ़ लिख कर कुछ काम करे, ऐसे सोचते थे। और मुझे तो कुछ भी मन नहीं लगता था पढ़ने में, और मेरे कुछ सब्जेक्ट बच जाने के बाद मैंने फाइन आर्ट स्कूल ज्वाइन किया और मेरा डिप्लोमा कंप्लीट किया। उसके बाद मैं कुछ मेरे दोस्त के यहाँ कुछ पुराने पेंटिंग्स देखी मैंने, और उस पेंटिंग्स देखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मैं भी इस तरह और यही टाइप काम करने के लिए मैं अपने लिए बहुत कुछ सोचते रहा। और उसके बाद मैं सुरपुर में गया, उधर कुछ जागीरदार ऐसे लोग से मिला, और वहाँ कुछ काम करने वालों के लिए, कारीगर के लिए मैंने उधर इधर ढूंढा, लेकिन वहाँ पर तो सब लोग वहाँ से छूट गए थे, और मैं बहुत ही निराशा होकर वापस आया। और मेरे साथ में कुछ वहाँ से पेंटिंग उठा लाई थी, उस पेंटिंग्स को मैंने कॉपी किया, ड्राइंग्स बनाता रहा। और उसके बाद मैं राजस्थान गया और वहाँ पर कुछ पुराने टेक्निक्स वगैरह सीखे, और मैं फिर सुरपुर स्टाइल ही कंटिन्यू किया। He
He happened to see some of the old authentic paintings of Surpur in a few friends' homes, and he collected these originals in exchange for the new copies he had made. मैं जो पेंटिंग्स के लिए सुरपुर पहुंचा, वहां तक सब पेंटिंग्स ख़त्म हो गए थे और कुछ बचा कुचा कुछ पेंटिंग्स थे, वो लोग देने के लिए इनकार करते थे। ऐसे वक्त में मैंने उनके लिए कुछ एक नया पेंटिंग बना के और पुराना पेंटिंग कलेक्ट किया। इस तरह करके मैंने वहाँ के 12 पेंटिंग्स कलेक्ट करा और जो भी मैं इतना सब कुछ किया उस पेंटिंग्स के लिए, मैं उसको अपना गुरु मानता हूँ और उसका बहुत ही कदर करता हूँ। Along with his painting career, the young artist pursued the habit of collecting old paintings, and his collections have a number of genuine original paintings of a bygone era. They belong to the Mysore school and the Tanjore school. Even some Mughal paintings have found a place in his admiring collection. To make an original painting of his own in Surpur style, he had to learn the secret of making the natural colors. So he went all the way to Rajasthan to master the art of making natural colors and also to create small, delicate, miniature paintings. जो पुराने पेंटिंग्स है उसमें रंग इतना सुंदर है कि कितने साल पुराने होते हुए भी अभी तक नए लगते हैं। इतने नए लगते हैं कि कल परसों बनाया हुआ है ऐसा लगता है। उसको जारी रखने के लिए मैंने मेरे लिए खुद मेरे कलर्स मैंने प्रिपेयर बना लेता हूँ और आजकल के जो बाज़ारी कलर्स हैं वो तो थोड़े दिन में ही उड़ जाते हैं। इसलिए मैंने राजस्थान में कुछ गुरुओं के पास अपना जो ट्रेनिंग जो टेक्निक सीखने के लिए उधर गया और मेरे लिए मैं खुद मेरे कलर्स मैं बना लेता हूँ। उस ऐसे कलर्स में मैंने मेरे खुद के लिए वहाँ पर मैंने 4 कलर्स तो सिखाया गया हूँ। वो 4 कलर्स हैं, एक हरा पट्टा, एक पीला पट्टा, लाल पट्टा। ये 4 कलर मैंने खुद मेरे लिए मैं बना लेता हूँ। Vijay's collection began with paintings but did not stop there. He found it interesting to collect anything with excellent craftsmanship, and they have been systematically arranged in his house. He loves them and cares for them. They are his dear ones. Like many other parents, Vijay's father wanted his son to become an engineer or a doctor or someone big in society. और हमारा बच्चा जो पढ़ाने के वास्ते इसके वास्ते मैं बहुत कुछ कोशिश करा, उसको जो है ना कॉलेज और हाई स्कूल में बहुत आगे बढ़ाना, उसको जो है ना डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना बोलकर मैं उसको बहुत कुछ हेल्प करते रहे। He was infuriated when his son showed all his love for arts and culture. इसी में थोड़ा ये करने लगे। After attaining his diploma from the Fine Arts School, his son started spending all his time at painting and all his income for his collections. We couldn't understand his behavior, why he spent all his money on buying that old stuff, recollects the father. But now his family not only supports Vijay, but admire him silently, because they have realized the value of his perseverance. समझ में आने लगे ये कुछ वो अपना काम के लिए कर रहा है बोलकर हम भी थोड़ा समझने के बाद जो है ना हम भी थोड़ा बहुत उसको हेल्प करते रहे। Bronze statues, stone sculptures, metal castings, and earrings, temple images, figures and ornaments, curios of all kinds, ages and regions, have found their way to his personal collection. The interest for antiques and curios developed in him was rather accidental.
यहाँ पर जो आपने जो चीज़ें देख रहे हैं, ये सब चीज़ मैंने इधर से विलेजेस में और यहाँ कुछ बाज़ार में कलेक्ट किया, और ये सब चीज़ लोग इसको जो बेचकर स्टील के सामान वगैरह खरीदते थे, और इस तरह से ये इतनी खूबसूरत चीज़ें सब ये लोग ये इसका तो बेइज्जत करते थे। वो देख के मैं कुछ कलेक्ट करने शुरू करा, और आजकल तो मैं इतना एडिक्ट हो गया हूँ, एक महीने में एक चीज़ भी मैं नहीं कलेक्ट करता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मेरा जो अर्निंग है अभी तक जो भी कमाया है वो सब इसमें स्पेंड करता हूँ। Whether it be a leather puppet or a palm-leafed book, he is addicted to buying them without a second thought. Naturally, his collection is growing month after month. His greatest desire is to set up a museum for his valuable collections and pass on his art form to future generations. Vijaya, a self-trained artist with rigorous discipline and lasting devotion, sincerely wants his favorite Surpur school of painting to perpetuate. But alas, there is no one coming forward to learn it except his own younger sister. His sister is a keen painter in the making and practices with him every day whenever he is free. Recently, Vijaya Hagaragundagi took part in the Artists' Festival in England on an invitation. This was an opportunity for him to demonstrate his skill, exhibit his work, and discuss wide-ranging aspects with other artists.